Hello, dear students. Assalamu alaikum and very good afternoon to all of you. Dear students, recently we completed our first chapter, The Lost Lesson. Now it's turn to begin, or it's time to begin our second chapter, that is Lost Spring. First was the last lesson, means LAST lost lesson. Now the Lost Spring. These stories of stolen childhood, and it is written by Jung. You will open the page number 13 of your textbook, and last lesson, first we will read about the author. Author Jung. She was born in 1964 in Rourkela, and she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Both her parents were writers. She has been earlier an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. And she has authored several books. Means she has written several books. And this our lesson is in excerpt from her book titled Lost Spring. Stories of Stolen Childhood. Stories of Stolen Childhood is actually a book written by Jung. The book is concentrated, or the theme of the book is how our children are suffered, how they are deprived of their childhood due to circumstances by different activities, and they are all dominated by the poverty and other miseries. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Jung इस लेसन की राइटर है. इस लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. जंग 1964 में पैदा हुई रोरकिला के मुकाम पर, और उसका बचपन और उसका लड़कपन जो है हैदराबाद में गुजरा. उसने बहुत यानी आला किस्म की तालीम याफ्ता पर्सनैलिटी थी जंग, जिसने तालीम हैदराबाद से हासिल की और वो आला तालीम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी चली गई. उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. उसके माँ बाप भी राइटर्स थे, और उसने एज एन एडिटर और कॉलमनिस्ट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में काम किया, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी. और उसने बहुत सारी किताबें भी लिखी. ये जो है हमारा लेसन, ये एक इक़्तिबास है इसकी एक किताब का, जिसका नाम है स्टोरीज़ ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड.
लेसन शुरू करने से पहले कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं। इन एक्सप्रेशंस का हमें जब हम सबक पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो उनका हमें मीनिंग देखना है क्या हो सकता है, लेकिन पहले ही इनको हमें देख लेना है। वी हैव टू लर्न देम बाय हार्ट एंड इट्स written this like notes these expressions in the text, infer their meaning from the text. Looking for is actually, its meaning is to make sure or take care that something is done, to search for. Perpetual state of poverty next है, and इसका मतलब है one who lives in a continuous poverty, जो दायमी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा हो। and next is slog their daylight hours, दिन भर सख्त मेहनत करना। slog means hit hard, beat something, to plod one's way, to work hard and heavily and steadily. That's it. And next is dog hutments. Hutments means huts, just like the tents where someone is residing, where there is no ventilation or no means to enter the sunlight in. That's dog hutments. Roof over his head means chat, to cover someone's head, to save him from the regressions of the weather, harshness of the weather. Imposed the baggage on the child, बच्चे पर किसी चीज़ का बोझ ज़बरदस्ती चढ़ाना या लादना, या उससे किसी ज़बरदस्ती का शिकार करना, ये इस एक्सप्रेशन का इसका मतलब हो सकता है। लेकिन जब हम लेसन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छी तरह से हम इसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द लेसन? लेट्स डिस्कस the cracks in the theme of the lesson. In this story, The Lost Spring, Anish Jung actually describes the miserable conditions of the poor children who live in slums, that we see that the expression is given, dog hutments. They have to work hard in order to make their survival possible. But where they work in dirty conditions. They are never sent to school because their parents are unable to pay for their education. They are not in a position to manage the education of their wards. In order to describe their lot, in order to describe their fate, in order to describe their luck, the writer first takes up the case of the poor rag pickers who have settled in the सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। रैग पिकर्स आपने भी देखे होंगे, हमारे यहाँ कश्मीर में भी बाहर से लोग आते हैं, वो तो
वो प्लास्टिक की बोतलें जमा कर लेते हैं या वो कुछ ऐसी चीज़ें जमा करते हैं जिनको बाद में रिसाइकल किया जा सकता है, जिनको रिसाइकल करके यानी जो इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें एज ए रफ मटेरियल काम आते हैं, तो इनको कुछ थोड़े बहुत पैसे उससे हासिल होते हैं और अपना वो रोज़गार उसी तरीके से चलाते हैं। लेकिन बहुत ही मिज़रेबल इनकी कंडीशन होती है। इनके ऊपर ना कोई छत होती है, ना इनका मकान, ना वो स्कूल जा सकते हैं, ना उनके कपड़े होते हैं, ना उन्हें सही खाना मिलता है। तो and these are the things which make them very unfortunate and which make them their life very miserable. First, she talks about those rag pickers. Rag pickers, this is the one section of a community. And next section, she takes up the bangle makers. Bangle makers have been living for generations in a dingy town, means a dirty town, Firozabad. These people have been exploited by all sections of the society. They work hard. They work hard under the miserable circumstances. This takes their sight, or their sight gets snatched away from them because of the hard work. And the young people, they thinking hard to come out of what their forefathers have sticked for the generations, sticked at for the generations. ये लोग जो हैं वो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं जिस चीज़ को उनके फोरफादर्स ने, उनके आबा अजदा ने बहुत दिनों तक क्या है उसको अपनाया है और अपनी लाइफ को उन्होंने मिजरेबल बना दिया है. और ये जो यंग जनरेशन्स है, दे वांट टू give up the job, they want to get rid of that situation, and they want to live a better life. This is enough for today, and rest we will discuss in the next lecture. Thank you very much.